Good morning, viewers. And today we are here with Dr. Rojna. I'm sure you all remember her. She was such an amazing in the last video where she showed us the OT setup. And today we are going to talk a lot about painless labor. तो इसके बारे में she has been practicing it for a long time, and I'm sure she is one of the best person who can explain in detail about painless labor. Before we talk a lot with you, Roshna, I want you to introduce yourself. Thank you, Dr. Richa, so much for this opportunity. My name is Dr. Rochna Bakshi. I am an anesthesiologist by profession, practicing now for the last 22 years. And my post-graduation I have done from KEM Hospital and GS Medical College. In the year 2000 I passed out, and since then I have done both medical college teaching as well as a corporate practice. You have done a lot of fellowships as well, Roshna. So I want also the viewers to know that what other fellowships you did. I did a short fellowship in blocks from Ganga Hospital in the south, in Coimbatore. Okay. That was almost, I think, 10-12 years ago. Yes. So you have been practicing all those things also. Nice. It's such a pleasure to have you and host you again on this little chat. सो आई वांटेड टू नो कि जो पेशेंट लेबर में जो प्रेग्नेंट होते हैं और जो नियरली डिलीवरी के पास आते हैं, आजकल वो पढ़ते हैं कि एक ऐसा भी टेक्निक है जिसमें दर्द नहीं होगा, और जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका पहला कंसर्न लेबर पेन ही होता है. इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ पेन्स दैट पर्सन कैन एक्सपीरियंस. तो आप व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल, और ये लेबर पेन के बारे में, ये पेनलेस कैसे करते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में एक्सप्लेन करें. Sure. So nowadays the woman in labor, she need not experience pain if she wishes to. Now there are various techniques, but the gold standard what we use nowadays is something called as epidural anesthesia. Now epidural anesthesia is a commonly practiced thing. Now I think over the last 20 years ये काफ़ी common हो चुका है, काफ़ी famous हो चुका है, क्योंकि there are lots of friends to whom we have given painless labor. And it is a safe thing to do, and even if later on patient requires for any other reason a cesarean section, the same epidural could continue as the anesthetic. तो वो भी उसका बेनिफिट है. तो benefit है, definitely benefit है. और a woman in labor, anytime that she demands an epidural, she can be given, she should be given rather. So initially ये था कि पेशेंट का सर्वाइकल डायलेटेशन 5 या 6 सेंटीमीटर है तभी आप इनिशिएट कर सकते हो, या 3 सेंटीमीटर है तो. पर आजकल ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल गाइडलाइंस. तो गाइडलाइंस के हिसाब से जब भी वुमन इन लेबर आपको डिमांड करती है, आपको कंसेंट देती है पेनलेस एपिड्यूरल के लिए, आपको वो इनिशिएट करना है. तो अब पहले जैसा नहीं है कि जब हम एक्टिव लेबर का इंतज़ार करते थे और तभी डिसाइड करते थे कि अब लेबर. बिल्कुल. इनफैक्ट जब अर्ली लेबर होता है डॉक्टर रिचा, इट इज ईजियर टू पुट द एपिड्यूरल कैथेटर आल्सो. Patient comes to you late in labor, it becomes technically more difficult putting a catheter, though you can manage it, but it is better for the mother that if she takes a decision, it is better to take it earlier in labor than later. हमको उन्हें पहले ही काउंसिल करना चाहिए कि किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है कि यू वांट टू विश टू गो फॉर एपिड्यूरल, आप हमें जल्दी बताएं, तो वो थोड़ा सा टेक्निकली भी इजी हो जाएगा, डिस्कम्फर्टिंग भी कम हो जाएगा मदर को. Yes, in fact there are AMC counseling sessions. So especially in the corporate hospitals and all, we have separate OPDs where the obstetrician sends the patient to the pre-operative anesthesia OPD. So where we also counsel them for labor, we show them pamphlets, we show them videos. और पेशेंट का कंफर्ट भी बढ़ जाता है बिकॉज दे नो दैट दिस इज द डॉक्टर, या ये प्रोसीजर मेरे ऊपर करेंगे. क्योंकि नॉर्मली अगर किसी पेशेंट को बोलेंगे कि हम आपकी पीठ में इंजेक्शन देंगे तो वो थॉट थोड़ा सा पेट्रीफाइंग रहता है, जबकि इट इज नॉट सो डिस्कम्फर्टिंग एट ऑल. तो मैं ये भी जानना चाहती थी कि आप किस तरह से पेशेंट को काउंसल करते हैं जब आपके ऐसे सेशंस होते हैं. राइट. सो it's simple. First of all, we like any other patient coming for a pre-operative any surgery. So the way I will look at the patient in the similar manner, I will see her for all her medical conditions. And after everything, after knowing that yes, she is fit to undergo an epidural, we will just explain to her कि आपके जैसे आपके पीठ को क्लीन किया जाएगा और आपको एक लोकल एनेस्थेटिक दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर मैं करूँगी आपको समझ में नहीं आएगा. एंड इनफैक्ट लेबर पेन
आपका जो है उस सुई के पेन से कई ज्यादा होने वाला है. So in this manner, if you tell them and you show them the pamphlets, rather I had videos of my previous patients, so I used to show them. So they used to get very happy looking at those videos. Correct. That this patient came this way, and immediately after the epidural was initiated, so nice she felt, and a smiling face. Right. So it is easier to convince them when you have pamphlets ready, when you have videos ready, when you have some presentations ready that yes, ये ऐसा हम करते हैं और ऐसा इसका आउटकम है. तो आपने कहा कि ये हम हर लेबरिंग पेशेंट जो पेन में है वो डिमांड कर सकती है जी. तो क्या कोई ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें आप एपिड्यूरल अवॉइड करते हैं कि आप ना दें इन केसेस में? Yes, now see there are certain contraindications. In the sense, first and foremost contraindication is total patient refusal. अच्छा. See, whatever it is, patient may be fit, but patient totally refuses. Naturally, we are against her consent. We are not going to do it. Secondly, excessive maternal hemorrhage. अच्छा. अगर पेशेंट को बहुत excess maternal hemorrhage लेके वो आती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, she's come in. That's where I'm going to be a bit skeptical about giving. Then infection at the site. Unfortunately, something she just got a boil or something, and right where I'm supposed to give at the back, if there is a localized infection, it is contraindicated. And platelet count. Correct. Now, the most important one of the most important criteria is having a low platelet. एक हमारे शरीर हमारे ब्लड में मांसपेशी होती है जो कि अगर एकदम ड्रॉप हो जाए, so if the platelets fall below 90,000 or so, we would contraindicate epidural. तो मतलब ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम ये इस समय नहीं देते. बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल. है. ये नॉर्मली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम कब दे सकते हैं. क्या हम एकदम फाइनल स्टेज में भी दे सकते हैं जब अब एकदम बेबी बाहर आने वाला है और मदर बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, फुल्ली डायलेट हो गया जिसे हम कहते हैं? बिल्कुल. नाउ हियर अगेन it is the expertise that you can use, in the sense there is another method called as a combined spinal epidural. जी. तो इसमें क्या होता है, epidural technically आप देखा जाए तो थोड़ा सा technically expert it's a procedure. But a combined spinal epidural is something where I put in मतलब drug, a small amount of drug will be deposited in her just spine, lower spine. In the lower spine, and it will immediately give her pain relief. अच्छा. And I get time to put in an epidural. मतलब epidural डालने के लिए मैं उसको पहले comfortable करती हूँ, एक थोड़ा सा opioid spinal cord के आसपास deposit करके, and I can make her then lateral position में या sitting position में जैसे वो comfortable है, फिर मैं epidural डाल सकती हूँ. ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है अगर आपने किसी भी मोमेंट पे अगर आप एपिड्यूरल के लिए ऑप्ट करना चाहें तो हम किसी तरह से आपका पेन डेफिनेटली कम कर सकते हैं. We can just give you some amount of small amount of drug in the spinal cord as well, if patient allows us to. तो डॉक्टर रुशना, हमें ये भी जानना था कि बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेशेंट का कि हम अगर ऐसा कोई मेडिसिन ले लेंगे या हमारा पेन ही कम हो जाएगा तो डिलीवरी कैसे होगी, तो इसके बारे में आप हमको बताएं भी और काउंसिल कैसे करते हैं वो भी बताइए. Right. Now, first and foremost, Richa, the thing is, you are not giving anesthesia here. Okay. There is a big difference between an anesthetic dose and analgesic dose. Now, analgesia means what? Pain relief. Anesthesia is anesthesia. मतलब आप पूरा सब कुछ sensations बंद कर रहे हो. तो लेबर एपिड्यूरल में ये है कि हम कोई भी complete stopping नहीं कर रहे of pain sensation, in the sense we explain to the mother that 100% pain is brought down to 70% relief. Correct. Or 80%. तो थोड़ा फील तो होगा हल्का. Yeah, but it is the feel she should have because she has to push. So it will be like pain score. अगर आपको 10 में से 10 हो रहा है तो माँ को यही समझाते हैं हम कि आपका हम 7 out of 10 कम कर देंगे. Correct. Okay. Around 1 to 2% आपको feel होना चाहिए so that you can push. And the main aim of giving all those dilute local anesthetics is that it will just subside your sensory pain. Okay, the motor blockade मतलब जहाँ पे मदर पैर हिला ही नहीं सकती, ऐसा हम नहीं करते. ऐसा हम करते ही नहीं है because हमें ultimately normal delivery चाहिए. Correct. So इसके it's a very dilute dose. हाँ, मतलब हमारी प्रैक्टिस में जब भी पेशेंट्स जाते हैं एपिड्यूरल के लिए तो डॉक्टर का और पेशेंट का दोनों का कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ ही जाते हैं. Yes. मतलब एपिड्यूरल दिया है इसकी वजह से तो कभी सिजेरियन नहीं लगता. नहीं. वो अलग कारणों से लग सकता है, लेकिन नॉर्मली ये डिलीवरी को
प्रोग्रेस होने में भी मतलब जल्दी पेशेंट भी बड़ी जल्दी से प्रोग्रेस हो जाते हैं. Absolutely. I mean, we've seen patients progress from 4 centimeters to almost 9 and 10 in 2 hours. Correct. And with very very dilute doses Right. that we give. So it is safe as far as patient is concerned. और एक और कंसर्न था जैसा पहला कि बच्चे पे इसका कोई इफेक्ट होता है क्या, ये क्या ड्रग जो है बच्चे को जाएगा या बच्चे में भी किसी तरह का तकलीफ करेगा क्या? नहीं रिचा, अगेन इट्स अ वेरी डाइल्यूट अमाउंट. वी आर नॉट गिविंग वेरी हाई डोज ऑफ ओपियोइड मेडिकेशन. एक होता है हमारा जो इस एनेस्थेटिक मिक्सचर में होता है. नाउ ओपियोइड्स, yes, they are known to cross the placental barrier in very small amounts, but again the doses what we are using is important. So it's such a minute dose that it does not cross across. I mean that that control we are keeping, that we don't give those high doses which will affect the fetus as well. अच्छा. So they need not worry about that. तो बच्चे का और मदर दोनों का सेफ्टी का पूरा ख्याल रहता है. दोनों की सेफ्टी का ख्याल रखना बिल्कुल. करेक्ट. तो एक और भी कंसर्न था जिसमें हम ये जानना चाहते थे कि आपका तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और एक ही गायनेक के साथ नहीं हज़ारों लोग मतलब एटलीस्ट 500 गायनेक के साथ आपने काम किया है. तो क्या आपको ऐसा लगता है पर्सनली एज अ एनेस्थेटिस्ट पर्सपेक्टिव कि जब आप एपिड्यूरल देते हैं तो क्या ऑपरेटिव डिलीवरीज जैसे फोर्सेप्स या वैक्यूम कुछ हद तक बढ़ जाता है, ऐसा आपको लगता है? थोड़ा बहुत, मे बी आउट ऑफ 10 मे बी 1 or 2 might require a vacuum, might require a forceps. But that's because again it depends upon the timing of your dosing. And maybe you've given a dose and then suddenly she progressed. So she's comfortable. So maybe pushing was a little problematic. So, but not that her labor was interrupted or something. She was, the baby is coming out, but just her push was a little less, maybe because the drug timing. So that's why we have to be very careful about the drug timings that we give. And but again it's not like not because of the procedure not that it because has of the increased. Absolutely not because of the और procedure. वैक्यूम तो अभी प्रिटी सेफ भी है, अगर अच्छी तरह लगाएंगे तो इसका कोई Absolutely. In fact, I've seen sometimes a lot of times vacuum being used even in LSCS deliveries. Correct. Where they have required in high floating units or something. तो वैक्यूम तो आजकल LSCS में भी यूज करते हैं जब कभी कभी. ठीक है, अब मुझे ये जानना था कमिंग टू द, ये तो बेनिफिट्स हमने बहुत सारे देख लिए, कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के एक्सपेक्टेड हैं और क्या ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? Truly speaking, Richa, I talked about some contraindications before. So one was the platelet count. Now, when platelet count is low as such itself, we will any anesthetist would avoid giving this epidural, because the one and only dreaded complication of epidural is a epidural hematoma. And what is this hematoma? वो एक ब्लड क्लॉट बन जाता है वहाँ पे जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेस हो सकता है. एंड वेरी रेयर चांस 1 in 2 lakh to 1 in 4 lakh that it could happen in a lady with a low platelet count, and it could cause a paraparesis. I mean something like a sort of a paralysis. But this is again I'm saying, if it's only in those sick patients in whom we would anyway avoid an epidural, we would not be giving. So when it's a low platelet count, I'm anyway going to avoid the epidural. So you don't see actual this. रियल प्रैक्टिस में तो इसके Touch wood in 22 years I कॉम्प्लिकेशंस haven't seen seen any hematoma. वेरी नाइस. एक और भी कंसर्न रहता है, पेशेंट को लगता है कि एक बार स्पाइनल में वो पीठ में एक इंजेक्शन दे दिया तो क्रोनिक बैकएक ना शुरू हो जाए. तो हमने पिछली बार भी इसको डिस्कस किया था, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप अपना हाईलाइट फिर से करें कि इसका क्या आप क्या कैसे काउंसिल करते हैं? Again, I stand by my point that the epidural does not cause a backache, in the sense a local pain because of the needle, that is a different story. But a chronic backache is not is not attributed to the epidural. Like I said, mother, she has just come out of her labor, so her backaches are because of laxity of ligaments, are because of calcium supplements not being taken. Right. When she's going to feed the baby, the body is going to need more calcium. Right. So वो बेबी के केयर में मदर फॉरगेट्स हर केयर एंड स्टॉप्स टेकिंग हर मेडिकेशंस. सो दैट शी शुड टेक केयर. इस टेक्निक की वजह से तो इसमें बिल्कुल भी सो यू आर कैरिंग द एपिड्यूरल कैथेटर ऑल्सो. तो हम चाहते थे कि आप वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि एग्जैक्टली क्या असेंबली रहती है उसकी. So this is the epidural needle, okay, and the viewers need not be worried, because we give a nice amount of local anesthetic before I put this, and then the catheter
That catheter is threaded through the needle. अच्छा. So Which if you can stays see, it's a inside. very hairline catheter. हाँ, Okay. हाँ. Now it threads through this. So this goes and places in the epidural space. Right. And then I thread the catheter in this manner. So this goes and places in the epidural space. अच्छा. And then the needle is removed. Correct. So what remains in the mother is this very thin hairline catheter. All right. So it's not going to give तो her any इसके pain. थ्रू ही आप इसके अपना through ही drugs मैं जो medicines है देती हूँ. जी. और ये जो है ये एक्चुअल स्पाइन के अंदर नहीं है, ये तो नहीं. बाहर के स्पेस It is in the in the space outside the actual spinal cord space. हाँ, तो So it's almost if you want I have a picture of it. yes, yes, certainly we'll see it. Yes. So if our viewers can see, spinal cord is here, okay, and this is the subarachnoid space, that is where I give doses when viewers can see. This is the spinal cord, and we are giving our epidural drug is here. Okay? So it's much outside. Right. So they need not be worried that it's going to damage anything or. The only concern which I talked about is a low platelet count and Right. where So actually we are not touching the spinal cord or the spinal cord space. This No, is no, outside. this is outside. तो डोज भी कम है और बिल्कुल. स्पाइनल कॉर्ड के पास भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं. Nice. All right. So we learnt a lot about painless labor और हमें ये ग्रॉसली तो समझ में आया कि अगर लेडीज इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती हैं और अगर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से भी वो डिस्कस कर सकती हैं. फिर भी वी वांट इफ यू विश टू टेल आवर व्यूअर्स एनीथिंग फ्रॉम योर वास्ट एक्सपीरियंस अबाउट दिस प्रोसीजर और एनीथिंग एल्स व्हिच यू विश टू. I would only recommend that yes, if a mother in labor she wants pain relief, I think she should go for it because if there are no contraindications which I talked about, it is a blessing from Almighty that we can have a painless labor. Now 20 years ago when I delivered, I am talking out of my personal experience. I had a very senior obstetrician who was going to deliver me, but she was very very skeptical about a labor epidural. She was not ready for me having a labor epidural in spite of me asking for it. So nowadays you all are lucky that all the obstetricians now in this era are going for it. They are ready for it because of course the obstetrician is the primary caregiver. Correct. So it has to be an obstetrician's consultation in hand in hand with the patient wanting it. Right. So it definitely helps in not just. It also is a very physiologically. I mean I'm talking a little technical here, but physiologically for the mother and the baby, the labor epidurals work wonders. Okay, especially in special cases like cardiac parturients. Now patients who have cardiac disease. Right. Hypertensives, etc. It really is a wonderful thing to take, and I would recommend that any lady in labor, if she's educated well enough, she should go for a labor epidural. It makes really the life. It changes life, and I mean we don't have time now, but I did have my videos in my previous laptop where actually a shouting mother and now a smiling face. Right. And she welcomes a baby with a very smiling face, and that's the biggest reward that you can have for that day. Right. So because the journey of delivering a baby, a new soul, can be made so much like a blessing or a It positivity just by removing that pain factor of Absolutely. it. So it is, and then later on also patient and mother is much more fresh to look after the baby, feed the baby. So it definitely has lot of positives. Things. It has a lot of positives. Yes. Definitely. Thank you, Yes. Thank you, Dr. Roshna Bakshi. It was such lovely talking to you. It's always pleasure to have you on our chats. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.